completed zero order reactions, right? And today we are going to start with first order reaction. So as before, for first order reaction also, we will start with the derivation of the integrated rate law expression. In first order reaction, we have taken a reaction that is A giving us a product P. The rate of this reaction can be given as minus dA, that is change in the concentration of reactant divided by the change in time. And rate law will tell me R is equal to K into the concentration of A to the power 1 because it is a first order reaction. Then when I equate both of these rate, I will get minus dA upon dt is equal to K into the concentration of A to the power 1. I will do variable separation. That means the concentration of A term will come to the left-hand side, that is divided by A. And in the right-hand side, we will have minus K dt. So in the left-hand side, we have dA upon A minus K dt. Integration of 1 upon x dx, it is equal to ln x, which is equal to log with the base ex. Now, once I integrate both sides, I will get ln A, and the limits will be A to A naught and minus K t with the limits t to 0. Now, when I plug in the limits, ln A minus ln A naught will be equal to minus kt minus 0. T minus 0 will be t itself. Now I can rearrange this and I can write ln A is equal to ln A naught minus kt. अब यहाँ से ना एक सिमिलैरिटी है जिससे आप इस एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं. जो जीरो ऑर्डर था दैट वाज A, इट इज इक्वल टू A naught minus kt. तो बस अब A की जगह क्या हो चुका है, ln A and ln A naught is there. ठीक है. Even though we are not going to directly use this particular expression for numerical purposes because we don't know how to deal with natural log, we know how to deal with the common log, that is log 10. So we will rearrange this once again and I will get kt is equal to ln A naught minus ln A. Kt will be equal to ln A naught upon A. And to change ln, that is natural log, to the common log log 10, I will have to multiply 2.303. So kt is equal to 2.303 into log A naught upon A. This is the expression that we are going to use for numerical purposes. Here A naught is the initial concentration. Initial concentration. A is the remaining concentration. Remaining concentration after time t. ठीक है. अब उसके बाद है आपका T half of the first order reaction. Now we know that T half is the time at which the concentration of reactant has reached the half value of the initial concentration. Initial का आधा हो चुका है. So the remaining concentration that is given by A will be equal to A naught by T because that is the remaining concentration. Now I will plug in the values. Kt is equal to 2.303 log A naught upon A. This is the general expression for the first order integrated rate law equation. I will put T is equal to T half and A as A naught by 2 because at T half A will be equal to A naught by 2. I will get T half is equal to 2.303 divided by K. K is coming here as denominator. Log A naught divided by A naught by 2. Now A naught and A naught will cancel and denominator is numerator, so we will get log 2. T half will be equal to 2.303 divided by K into log 2. When you plug in the value of log 2 and multiply by 2.303, you will get 0.693. So T half is equal to 0.693 divided by K. And one important point here, we have to note that T half of a first order reaction is only dependent on the rate constant K and it is not dependent on the initial concentration. तो अगर आप 10 मोल्स ले रहे हैं तो 10 से 5 होने में अगर आपको पास 2 मिनट्स लग रहा है तो 100 से 50 होने में भी इट इज गोइंग टू टेक 2 मिनट्स ओनली. ठीक है. सो दिस इज द एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी ऑफ द टी हाफ. कैसे क्या समझ में आता है? what is this telling us that if you are going to go from 10 to 5 and also it is going to take 2 minutes, that is the half concentration. और अगर 100 का भी हाफ करना है तो आपको 2 ही मिनट्स लगेगा. ठीक है. तो it is independent of the initial concentration. So T half of first order reaction is independent of initial concentration. This is a very important point. If T half is given, then K is also given and vice versa. In this particular point, I am telling you that if they have given you the T half of a particular reaction, then please understand that they expect that you know this formula and you know the K also. So T half diya hai to K diya hua hai, and if they have given the K, then they have also given the T half. So this is one of the expression that you have to learn by heart. T half is equal to 0.693 divided by K for first order reaction. Now, when we are going to calculate the T 100%, so T 100% for first order reaction will be the concentration of A will be equal to 0. Because what is 100%? 100% means, yes, Krishna Priya, how much amount
is reacted Everything, sir. when everything is reacted. Everything is reacted. So what is the amount of reactant left? 0. 0. Very good. So A will be equal to 0. So T 100% will be equal to 2.303 divided by K log A naught upon A. When A is equal to 0, this A naught by 0, this will be equal to infinity. Log of infinity will be infinity. Anything multiplied by infinity will be again infinity. So T 100% will be equal to infinity. That means the first order reaction never goes for completion. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, अब आप क्या कीजिए, नोट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन KT is equal to 2.303 divided by log A naught by A and T half is equal to 0.693 by K. ठीक है, please note these two down and raise your hand once you're done. Assalamu alaikum Arsalan, how are you? Walaikum assalam. How are you Arsalan? Fine. Yes, sir, I'm fine. एग्जाम्स हो गए आपके, प्री बोर्ड वगैरह खत्म हुआ कि नहीं? नहीं, कल एक बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम है साइकोलॉजी का, तो वही करना, और एक इंग्लिश का भी है अंत में 30th को जनवरी का। 31st को क्या है? 30th को इंग्लिश का कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम है, कल मेरा साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्जाम है। इंग्लिश का प्रैक्टिकल एग्जाम है? यस सर, फॉर सम रीजन वो भी एक है, क्या कहते हैं, उसका प्रोजेक्ट ये सब बनाना पड़ेगा पहले। तो इंग्लिश का होता है कृष्ण भाई, you also have English practical exams? We had Viva, sir. Only Viva. इंटरनल मार्क्स सर कुछ देना पड़ता है? थिंक सो, मेरे लिए भी वही है, वाइवा जैसा। हाँ, इंग्लिश प्रैक्टिकल बैचेस एंड टाइमिंग शैल बी सेंट ऑन पेपर 30। अच्छा, मेरा कुछ 29th को होगा मुझे लगता है। अच्छा, 29th को इंग्लिश प्रैक्टिकल होगा, तो उसे प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बारे में बोलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, प्रेजेंटेशन टाइप से कुछ? हाँ हाँ, एसेंशियली वो। अच्छा, so Arslan, you just note down these formula KT, this that is under the white rectangle and the one which is in the blue rectangle. इन दोनों को please note down कर लीजिए and then raise your hand once you're done. यस सर। Calculate the half-life of the first order reaction from the rate constants given below. ठीक है, you have this formula T half is equal to 0.693 divided by K, है ना? Please calculate. You don't have to turn anything, you don't have to convert the यूनिट्स ऑफ टाइम। सेकंड को है तो सेकंड में ही आएगा आंसर उसका, और मिनट है अगर इनवर्स तो मिनट में आएगा, ईयर है तो ईयर में आएगा। ठीक है, यू डोंट हैव टू कन्वर्ट दी यूनिट्स ऑफ टाइम।
Okay, I got one answer. Yes, I think that is fine. हाँ ठीक है. असला आपसे हो रहा नहीं हो रहा है? पहला वन होगा सर. चल हो गया. So you can send the answer on the Zoom chat. ओके सर. जी Arslan, first one is fine. ठीक है. आई थिंक दीज आर क्वाइट, मतलब कैलकुलेशन इसमें इजी हो जाएगा. 200 से आपने कर दिया तो 2 मिनट वाला भी आराम से हो जाएगा फिर. राइट. दी difference will be in decimal points and the unit. ठीक है. सो फॉर द फर्स्ट वन आई होप ये आपका आंसर है सबका. 0.003 कृष्ण प्रिया. 0.3465. हाँ ठीक है, दिस इज फाइन. एंड फॉर मिनट, ये वैल्यू हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट की भी है यहाँ पे. ठीक है. इट इज 0.3465 मिनट्स. 0.693 में आप क्या कीजिए, इसका बस डबल कर दीजिए आप, मतलब 0.693/4 ना. और इसका हाफ कर दीजिए आप. ठीक है. 0.693 डिवाइड बाई 2 का वैल्यू आपको पता है. उसको एक और हाफ कर दीजिए तो यू विल गेट 0.17325 ईयर्स. मेक सेंस अरसलान? कृष्णा भी आपने तो तीन आंसर दे दिया है. यस अरसलान, मेक सेंस? यस सर. ओके फाइन. आई थिंक वी विल हैव मोर क्वेश्चंस हियर. ट्राई दिस. लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प, है ना.
I've got one answer. log 5 log 3 की वैल्यू, अच्छा log 5 log 3 लिख लीजिए पहले आप. log 3 is equal to 0.48, log 5 is equal to 0.7. I think it will be second inverse है ना. ठीक है, let us see. सो यहाँ पे जो सबसे पहले आप लोग के पास प्रॉब्लम आएगा ना, अच्छा टाइम पूछा हुआ ना उसमें, ठीक है फाइन देन. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम विल बी कि ऑर्डर कौन सा है. सो सिंस वी आर डूइंग द टॉपिक दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, तो आप लोग को तो आराम से पता चल जाएगा. बट इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू लुक एट द यूनिट्स of the rate constant, and from the units of rate constant you can say that it is first order reaction. Calculate the time taken for 5 gram of reactant to get reduced to 3 gram, यानी कि 5 से 3. A naught is 5 and A is 3 grams, and they are asking for T. Now we know that the formula is Kt is equal to 2.303 log A naught by A. So T will be equal to 2.303 divided by K log A naught by A. We'll plug in the values. 2.303 divided by 6 log 5 by 3. Log 5 by 3 will be log 5 minus log 3. This will be in brackets. Okay. Now 2.303 divided by 60 is as it is. Log 5 minus log 3. Log 5 is 0.7. Log 3 is 0.48. When you subtract this, you will get 0.22. And here you have the value 2.303 into 0.22 divided by 60. If you calculate this, you will get 8 into 10 to the power minus 3. ठीक है. So this is how you are going to solve it. अरसलान, आपने कहाँ तक किया था? सर मेरा ये इतना तो कर देता है 2.303/60 log 1.7 में लिखा. log 1, अच्छा 5 5 by 3 को आपने डिवाइड कर दिया. हाँ अच्छा नहीं ऐसे नहीं, you know नहीं the नहीं, मैं log. 0.7/0.48 मैंने क्या था. नहीं एक सेकंड, क्या log, टेल मी. log 5/3 था ना, तो log 5.7 है और log 3.48 है, तो मैंने उन दोनों को डिवाइड किया था 0.7 से वो 0.48 नहीं से. नहीं ऐसे नहीं होता है. देखिए हाँ log का एक रूल होता है, log a by b. You know this or you don't know this? नो सर, आई डोंट नो दिस. You don't know. क्या बोला आपने? ओ हाँ हाँ, ये वाला. ओके. है ना. हाँ ओके. ये तो सेम चीज समझ है गया. ना, मेक सेंस. हम्म. ठीक है. चलें. Write this next question. A first order reaction is 40% complete in 80 minutes. Calculate the value of the rate constant. ठीक है. Please write this question. I'm again giving you guys 3 minutes, है ना. 3 मिनट में आप अटेम्प्ट कीजिए. अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छा. नहीं अगर हुआ, so you will send me whatever you have done. I want to see how you are working for this particular problem.
Okay, time is up. Okay, fine. Krishna Priya, can you also please send me whatever you have done? Arslan, you also send me whatever you have done. You will send me on WhatsApp, guys. I don't have a phone right now, sir. So you don't have the phone, okay, fine. Arslan, just you can send me. वैसे भेज चलिए, ठीक है, दैट्स रियली गुड। चलिए, हम यही बस देखना चाह रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट। सो अगर 40% कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन, तो 40% इज रिएक्टेड, रिमेनिंग इज 60। ठीक है, तो ए नॉट आपके पास तो हो जाएगा 100, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए 100, कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी 60 है। दैट्स गुड, रियली गुड। ये बस यही देखना चाह रहे थे। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ए नॉट इज इक्वल टू 100, ए इज इक्वल टू 60, टी इज इक्वल टू 80 मिनट्स, एंड व्हेन यू फर्दर कैलकुलेटेड, ये क्या आपके पास लॉग का वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं आ जा रहा है? अच्छा, यू हैव टू, असलान, देखिए, यस सर। मेक सेंस? हम्म ठीक है, चलिए, सो यू विल गेट द आंसर इज 06.25 इंटू 10⁻³ 10⁻³ मिनट इनवर्स। हाँ जी, ठीक है, फाइन। चलिए, आपके पास अगला सवाल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। इसके लिए 2 मिनट तक आप दिमाग लगाइए। अगर आपसे आंसर हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज तो करते हैं इसको, है ना। ओके, अर्सलान, कृष्ण प्रिया, कुछ प्रोग्रेस है? समझ में आ रहा है कैसे करना, नहीं करना है?
Yes, Arslan? Yes, some progress is there. Okay, what about you, Krishna Priya? Yes, sir. Okay, so I think I will just increase 1 more minute for you guys. Okay, and then you can send the answers. Okay, Krishna Priya has got the answer. Aslan, what about you? Can you send me whatever you have done? Yes, sir. अच्छा, के निकाल के फिर आप उसको, ठीक है, फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.6, 0.4 चल, ठीक है, फाइन। कृष्ण प्रिया कितना आंसर आया? 25 मिनट्स। या, दैट्स करेक्ट। यहाँ तक आपने किया है, राइट रसला? टिल हियर यू आर डन। Yes, sir. ठीक है, फिर उसके बाद यू आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। के की वैल्यू से फिर आप टी आप निकाल सकते हैं, 0.693 डिवाइड बाई के, है ना? चलिए, प्लीज कॉपी दिस डाउन, आप एक बार लिख लीजिए। Just raise your hand once you're done. Yes, sir. Done. ठीक है, let this next question.
इस सवाल को देख लीजिए जरा। Here. This is one of the most asked question from chemical kinetics. T90 percentage और T99 percentage के बीच में relationship. So when T90 percentage we are having, so A naught will be equal to 100 and the remaining concentration will be 10 because 90% of the reaction is completed. So I can write T90% is equal to 2.303 divided by K, whatever the rate constant is, log 100 upon 10, that is log 10. So T90% will be equal to 2.303 log 10 value is 1. So this is the value of T90 percentage. For T99, A naught will be 100, A will be 1. So T99% is equal to 2.303 divided by K log 100 upon 1 and log 100 is 2. So I can write T99% as 2.303 divided by K into 2. Now if you just rearrange a bit, you will get 2 into 2.303 divided by K, which is nothing, but it is T90 percentage. So I can write T99 percentage is equal to 2 into T90 percentage. Okay, so this is a very important question. मतलब इसको आप 2-3 बार रिपीट कर ही लीजिएगा, बहुत चांसेस है कि आपके क्वेश्चन पेपर में हो। Raise your hand once you're done writing this. Now we have the graphs of the first order reaction. ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए जरा. These graphs are also directly asked many a times. तो पहला तो graph that is directly from the rate expression. Rate is equal to K into the concentration of A. So it is in the form of Y is equal to mx. So we'll have a graph which is passing through the origin. The x-axis is the concentration, initial concentration of the reactant, and R is the rate. As we increase the initial concentration, the rate of reaction also increases. Next graph is we can have two equations which will have similar graph. Okay, ln A is equal to ln A naught minus KT, or log A is equal to log A naught minus KT upon 2.303. Both of these are going to be in the form of Y is equal to mx. But difference क्या होगा? If I take the first equation, then on the y-axis I will have ln A, and if I take the second equation, I will have in the y-axis log A. ln or log का फर्क होगा. Similarly, in the intercept also, I will have ln A naught if I take the first equation. If I take the second equation, it will be log A naught. The slope will also change. In the first case, the slope will be minus K. And the second case, the slope will be minus K upon 2.303 because T is the x-axis. And whatever is with the T, whatever is with the x-axis is the slope. So हमारे पास x के साथ है minus K upon 2.303. So this is the slope here. A similar way, we can write the ln A naught by A is equal to KT, or log A naught by A is equal to KT. तो यहाँ पे भी ln A naught by A और log A naught by A will be in the y-axis. Slope यहाँ पे K और यहाँ पे K upon 2.303. So wherever we have log, the slope is K upon 2.303. है ना, यहाँ पे भी आपके पास K is K upon 2.303, but in negative because ऊपर से नीचे आ रहा है. The fourth graph is for T half.
So T half versus the initial concentration will be a straight line that is parallel to the x-axis, because the initial concentration, it does not affect the half-life of a reaction. Half-life of a first order reaction is independent of the initial concentration. ठीक है? So that is why this will be a constant. अच्छा, ये जो point होगा आपके पास, this point, the value of this point will be 0.693 divided by k. ठीक है? तो ग्राफ में ऐसा सवाल आ सकता है, आपकी इसका ग्राफ दिया रहे और ये वाला पॉइंट मेंशन किया रहे, दिस इज द, इसकी वैल्यू इतनी, ठीक है? सो दिस वैल्यू विल बी 0.693 अपॉन के, उसके बाद आपसे रेट कांस्टेंट पूछा जा सकता है, ठीक है? सो दीज आर द different graphs of the first order reaction. We have done a few numericals, and let us move on to the next topic. ये एक सवाल, इसको कर लीजिए जरा. We have got one answer. Log is equal to minus, minus में आ रहा है. So, see. The question is saying during a nuclear explosion, one of the product is 90 strontium 90 with half-life of 28.1 years. If 1 microgram of strontium 90 was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, and this will only happen because strontium is of the same group. So strontium भी 2 positive charge बनाता है, calcium भी 2 positive charge बनाता है, ठीक है? That is why
they will be they can get absorbed in the bones rather than calcium, है ना? Calcium होता है bones में instead of calcium. How much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? That means if it is not digested, then how much will be remaining? ठीक है? Now let us see. So first thing is that strontium 90 is a radioactive substance and radioactive decay it follows first order kinetics. यहाँ पे एक तो सबसे पहला सवाल आता है दैट इज कि कौन सा मतलब order of reaction होगा. So it is going to be first order. All the radioactive decay it is first order reaction. They have given the T half. If they have given the T half, that means they have given the K also. So K will be equal to 0.693 upon 28.1 if you rearrange the formula. Now the A naught is 1 microgram. A का हमको पता नहीं है and T is equal to 10 years first of all. 10 years में देखना है. We know the formula Kt upon 2.303 is equal to log A naught by A. Log A naught is 1 है ना 1 microgram था. A we have to calculate. Now we have got that. चलिए यहाँ तक आया है शायद ना. ओके कृष्णा प्रिया has got log A is equal to minus ठीक है. So अब ये आपके पास एंटी लॉग यहाँ पे आ जाता है दैट ये पता है आप लोग को log 100 is equal to 2. अस्सलाम वालेकुम कृष्णा प्रिया. Yes, You know sir. this? Arslan, what about you? Yes, sir. ये बेसिकली आ रहा कहाँ से? It is 10 to the power of 2 is equal to 100. ठीक है? तो वैसे ही अगर हम करें तो 10 to the power minus 0.106 is equal to A. Make sense? देखिए है ना. तो A will be equal to what? जैसे 100 I can write from here ना 100 is equal to 10 to the power 2. So from here I can write A is equal to 10 to the power minus 0.106. Tell me if you understand this. जी अरसलान कृष्णा प्रिया. This part. Yes. बताएं गाइस. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है दैट वी हैव 10 टू द पावर माइनस 0.106. सो वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म कि आपके पास जो जैसे 0.894 minus 1 will be equal to 0.106. So you have to write it in a form where 0.106 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर है दैट इज 1. तो 1 नेगेटिव में हो एंड द डेसिमल पार्ट इज इन पॉजिटिव. इसको ऐसे अरेंज करना रहता है. अब ये चीज हम सिखाते हैं 11th स्टैंडर्ड में. ठीक है. बट जनरली आपको एंटी लॉग की वैल्यू दे दी जाएगी इसके लिए. सो हियर यू विल गेट instead of minus 106 I can write 0.894 minus 1. ये भी वैल्यू क्या बताएगी? माइनस 0.106 ही दे. ठीक है. now I can write this as 0.0894 10 to the power 0.0894 into 10 to the power minus 1 and log 9 it is log 9 नहीं log 8. log 8 की जो वैल्यू होती है it is equal to 9 0.9 not 9 0.9. So I can say 10 to the power 0.9 is equal to 8 and 10 to the power 0.9 बोले हम चाहे 10 to the power 0.08 नहीं बोले it's almost same thing है ना. तो I can approximate this 0.89 to 0.9 and I can say 10 to the power 0.9 will be equal to 8. 8 into 10 to the power minus 1 तो 0.8 ग्राम माइक्रोग्राम्स हो गया. ठीक है. From here I can write 10 to the power 0.9 is equal to 8. इसको देखिए वहीं से हमने लिखा है since 10 to the power 0.9 is equal to 8 10 to the power 0.89 will also be equal to 8. Okay, please copy this down.
Raise your hand once you're done writing. Raise your hand once you're done, guys. Done. Next we have pseudo first order reaction. ठीक है? Pseudo first order reaction is basically क्या होता है? There are many reactions in which seems like two order if you look at the surface, but they are considered to be first order reaction. ठीक है? At some particular condition. The reaction which is not truly first order, but under certain condition it becomes first order, and it is called pseudo first order reaction. तो अगर किसी रिएक्शन को आपको लाइक इफ यू हैव टू कन्वर्ट अ रिएक्शन टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप क्या कीजिए, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए. ठीक है? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस डज नॉट अफेक्ट द रेट एंड हेंस इट इज नॉट कंसिडर्ड इन द रेट इक्वेशन. क्या मतलब है इसका? लेट अस सपोज आई हैव 20 moles of a reactant A and I have 1000 moles of B. ठीक है? अब इसमें हमने दोनों का एक एक मोल बढ़ाया. I did 21 और यहाँ पे 1001. इसका आपको यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा होगा that the effect of this 21 moles increase will be very high and almost no change will be seen. अगर हम मान लीजिए ऐसे करें. ठीक है? अब इसके बाद हम लोग दो कर रहे हैं. टू मोर एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग. 21 प्लस 1000. हमने 21 मोल्स किया ए को और बी को 1000 ही रहने दिया. दूसरा हमने 20 प्लस 1001. You can understand that this particular change will not affect the rate of reaction much because B already बहुत ज्यादा, उसमें एक मोल बढ़ा के कोई फायदा होगा. There will be not much effect of the increasing the amount of B rather than A. तो जो excess में होता है ना, the reactant which is present in excess, it does not affect the rate of the reaction. That is why we don't consider it in the rate law expression. Now, if we have a bimolecular reaction, that means there is two molecules as a reactant and one of them is in excess, then the reaction becomes first order, even though it is bimolecular. अब उसका एक example, hydrolysis of ester. Ester plus H2 gives carboxylic acid plus alcohol. We have RCOOR dash plus H2, it's RCOH and R dash. ठीक है? अगर हम इसी को excess में रखेंगे, then what will happen? This particular reaction, which is essentially a second order reaction, it becomes first order when H2O is in excess. और रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर. वाटर को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज टू हाई. नाउ इतना हाई है कि वो उसको रेट को अफेक्ट ही नहीं कर रहा. सो देयर इज वन क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन अ पीवाईक्यू. उन्हें पूछा हुआ इस तरह से कि a reaction A plus B gives product is found to follow the following rate expression.
R is equal to KAB square. Determine the order of reaction if B is taken in excess. तो अगर आपने B को excess में ले लिया तो B को consider ही नहीं करेंगे, और B को जब consider नहीं करेंगे तो हमारे पास rate expression में सिर्फ क्या बचेगा, R is equal to KA, और A का power क्या है, 1 है, so the order will be equal to 1. Right now the order is 3, but if B is taken in excess, then the order will become equal to 1. ठीक है, since B is in excess, it will not be considered in rate law expression. R will be equal to K into A to the power 1, so order will be equal to 1. Now, this is यही एक सवाल है जो आपके पास आ सकता है. Otherwise, they can directly ask what is a pseudo first order reaction, or they can ask you to give an example, or they can give you this reaction और उसमें बोल दिया कि H2O excess में है, write the rate law expression. तो ये आपके पास जो simple notes हैं वही सवाल आ सकते हैं. ठीक है, in the form of a question they can ask you these things. अगला है collision theory. So collision theory के बारे में we did start a bit like when we were doing how the concentration changes the rate of reaction. तो वहां पे हमने देखा था कि a reaction can occur only and only if there is a collision between two reactant molecules. The collision theory, it goes into a bit more detail, like what type of collisions will give you actually the product. So the initial statement is as it is, that there must be collision taking place between reactant molecules, but every collision is not fruitful. Only a small number of collisions are effective and they bring about chemical reaction. So इसका मतलब ये है कि not all collisions are effective. Now we are going to see why they are not effective. पहला तो है कि let us suppose we have a reactant A and it will be a molecule, and इस reactant A का ये वाला portion reactive है, ठीक है, here is the more reactive part, और आपके पास है दूसरा B. B is something like this, और B का ये वाला portion reactive है. If A and B are going to collide in this direction, इस तरह से अगर collision होगा, then obviously there will be no reaction, है ना? So the reactive part of one molecule should collide with the reactive part of the other molecule. Then only reaction can happen, and that we call as proper orientation. So the molecules which are colliding, so not all molecules will be colliding in the proper orientation, right? So the only molecule which are colliding in proper orientation will give you the chemical reaction, will give you the product. One more thing is that each collision, it should happen with a certain kind of energy. If the molecules they just touch each other, and they are colliding in the sense of just the definition of collision, that they are just touching each other and going away. So when they're just touching each other, at that time also the reaction will not happen because उनके पास उतनी energy नहीं. So there should be a proper energy of the molecules. There should be speed, I would say, because energy उनके पास जो होगा, that will be basically kinetic energy. And when that energy is present as well as the proper orientation is present, then only the reaction can occur. ठीक है, so दो चीजें, proper orientation and threshold energy should be there. So what is threshold energy? That's the minimum amount of energy required by the reactant molecule for effective collision. It is known as threshold energy. All these definitions are also important. You directly पूछ सकते हैं. Now, ये एक अच्छा सवाल आ चुका है एक बार कि in some cases the reaction is found to be slow even if a large number of colliding molecules have energy higher than threshold energy. Why? So they are saying that one of the condition has been met for effective collision. Necessary condition क्या? Proper orientation, threshold energy. So only one condition is met, that is threshold energy. So if the threshold energy condition is met and still the reaction is slow, that means proper orientation is not there. So इसका simple answer is due to improper orientation of the colliding molecules. ये ऐसा सवाल है जो जनरली मिस कर जाते हैं बच्चे कि पता नहीं इसका आंसर क्या होगा. So please revise it once जब आप लोग इसको देख रहे हो, तो इस सवाल को मत छोड़िएगा. ठीक है, so there are two conditions. अगर उन्होंने ऐसा बोला ना कि the large number of colliding molecules are colliding in proper orientation, still the reaction is slow, तो फिर हम बोलेंगे हाँ, because they are not having enough energy. Threshold energy में हमारे पास molecules नहीं है, तभी जाकर reaction slow होगा. When both the conditions are met, then the reaction will be fast. ठीक है, अगर एक condition आपके पास, one condition is there but the reaction is slow, that means second condition नहीं होगा वहां पे. ठीक, चलिए moving on. The rate of reaction according to the collision theory, it is given as rate of reaction, it is equal to P into Z of AB e to the power minus EA upon R. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इसमें जो मतलब है यहाँ पे, like these are quite important because it is given as it is in the NCERT. और इससे लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में एक सवाल था, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे सवाल. इट्स गोइंग टू बी इजी. ठीक है,
उसमें था रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि P की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, तो इट विल लाई 0 to 1 बिकॉज इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेरिक फैक्टर। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेरिक फैक्टर का मतलब भाई कि कितने प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Z इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन A एंड B मॉलिक्यूल की एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं। सो लेट सपोज एक सेकंड में 1000 कोलिजन हो रहे हैं, बट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेरिक फैक्टर जो होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन और थ्रेशोल्ड एनर्जी को मिला के 0.2 है। That means if there are 100 collision taking place, only 20 of them is going to give you the product. तो वो probability वहां पे है। E is the activation energy, R is the gas constant and T is the temperature। इनके बारे में उतना नहीं पूछा जाएगा, बट यहाँ पे जो specific important है that is P and Z। P is the probability factor 0 से 1 तक लाई करेगा and Z is the frequency of collision, how much collision is happening per second। अब जो एक नया टर्म हम लोग को यहाँ पे मिला है that is activation energy। Activation energy and threshold energy they are related। वो relation क्या होगा उसका देखिए। When we have the activation energy, it is equal to the threshold energy minus the average energy of the molecule. Each and every molecule, it has some energy. अब उस एनर्जी से ऊपर उठा के आप थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुंचा दीजिए। सो दैट गैप बिटवीन द एवरेज एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, that is known as the activation energy. Here we have two different graphs activation energy के लिए, and we have to deal with how the reaction progress। इन ग्राफ्स को थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, here we have reactant and here we have product। तो we know that each and every molecule it needs to have a particular threshold energy, तभी जाकर reaction होगा। So the average energy of the reactant is here। You have to give it energy in order to do the reaction। Activation energy इतनी है, तो यहाँ से इसने up हिल गया, and then it makes product, and the average energy of the product is this much। So the average energy of product is less than that of reactant। That is why when we calculate the enthalpy of reaction, that is the difference between the energy of product and reactant, the product की energy कम है, so EP minus ER will be negative, and when the delta H is negative, it is exothermic। In the other way, अगर हम reactant का जो energy that is low, it reaches activation energy, फिर उसका product बनाता है, and the energy of the product is higher। In that case, the energy of product and minus energy of reactant will be positive, and that will be an endothermic reaction। And the difference between the reactant's energy and the threshold energy, that is the activation energy, जो extra energy देनी चाहिए, मिलनी चाहिए reactant molecules to achieve what? To achieve the threshold energy। And this particular point पे जो highest energy state है of the molecules when they are doing the reaction, that state is known as transition state। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में आगे भी दिस इज इन द डायग्राम और ग्राफ में ट्रांजिशन स्टेट का वो दिखाया हमने। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा यहाँ पे देयर आर सम ऑब्जर्वेशंस। व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज हायर द रिएक्शन इज स्लो, बिकॉज आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़े, ज्यादा एनर्जी के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। व्हेन द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर देन द रिएक्शन इज फास्ट। एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपने कम कर दिया तो बहुत आसानी से रिएक्शन होगा। वन ऑफ द रीजन इज एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपने कम किया है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आसानी से रीच हो जाएगा, ठीक है। व्हेन कोलाइडिंग पार्टिकल्स पोजेस एनर्जी दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, then the atomic configuration is called transition state और activated complex, ठीक है। तो ये सवाल डायरेक्टली भी आ सकता है, what is transition state और activated complex। Give an example, so you will give this example that H2 plus I2, there are hydrogen molecule, iodine molecule, they are reacting with each other to give you HI, the HI molecule, hydrogen iodide। reaction कैसे होगा? The hydrogen bonds will be breaking, so उसको हमने red से denote किया है। hydrogen and iodine bonds will be forming, तो उसको हमने green से denote किया है। So HI is breaking, HH is breaking, II is breaking, and HI is getting formed। So this is the transition state where all of these molecules are taking part in the reaction। Make sense? Yes or no? Please tell me till here। Yes sir। Yes, sir. ठीक है, अब इसको लेकिन रिवाइज कर लीजिएगा जरूर से, अदरवाइज यू विल फॉरगेट दीज थिंग्स। ये एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, यू कैन रीड इट फ्रॉम द एनसीईआरटी, और उससे आप थोड़ा सा खुद से नोट्स बना लीजिएगा वहां पे। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली फ्रॉम दी, ये आप लोगों ने 11th क्लास के इसमें भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था आपके सिलेबस में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं? नो, ओके फाइन, Was there, sir? was there ना, ठीक है। तो वहाँ इट इज वेरी सिमिलर, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बस ये बताता है that kinetic energy, it is a graph between kinetic energy and the frequency of molecules। so molecules with very less kinetic energy are very less, and the molecules with average kinetic energy are very high, and the molecules with very high kinetic energy is also very less। आप देख सकते हैं
दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम है जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप इनको पढ़ेंगे तो एक बार समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। Now, there are factors affecting the rate of reaction. So we have discussed the concentration of reactant. It is very important. The basic idea is rate increases when there is increase in the concentration of reactant. Physical state को हम लोग डिस्कस करेंगे. Temperature we have to discuss. It is also very important. Catalyst हमारे पास important है. Surface area of solid and pressure of the gas. Pressure for gases reaction. These are not very important, but फिर भी इनको हम डिस्कस करेंगे. First सबसे पहले physical state of reaction. So rate of homogeneous reaction will be always equal to rate of heterogeneous reaction because वहां पे physical transformation को हम लोग को consider नहीं करना पड़ेगा. When we have homogeneous reaction in which all the reactants and all the products are having the same phase, solid, 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 yeah, liquid, 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 gas, gas, gas. So whenever we have these type of reactions, in that case, the reactant molecules or the product molecules, they don't have to go phase transformation. क्योंकि solid से liquid और liquid से aqueous में नहीं convert होना पड़ता है. That is why the rate of homogeneous reaction is always greater than rate of heterogeneous reaction. In case of homogeneous reaction, it will depend on the frequency of collision. Frequency of collision is obviously going to be higher in the gaseous molecules, followed by liquid, and then followed by solid. Next is temperature. We will discuss the temperature part in detail in the Arrhenius equation, but right now, एक simple सा फंडा आप समझ लीजिए that as temperature increases, the kinetic energy of the reactant increases. Kinetic energy अगर increase करेगी, number of effective collision will also increase, which will lead to the increase in rate of reaction. Therefore, we can say that rate of reaction is directly proportional to the temperature. Now, what is the exact formula for this? We will be studying in Arrhenius equation. Next is catalyst. Now, what is catalyst? Catalyst is something that changes the pathway of the reaction. Now, when it is changing the pathway of the reaction, it chooses a pathway which is having lower activation energy. And when it is having lower activation energy, तो आपको पता है, activation energy is lower, the rate of reaction is faster. That is why a catalyst is a substance which increases the rate of reaction without undergoing permanent change. ठीक है? Now, how does this is the catalyst? This is the definition for catalyst. Now, how does catalyst work? देखिए, let us suppose we have a reaction ध्यान से सुनिएगा, जहां पे A क्या है बोलिए जरा. A is बोलो 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 बोलो, अदरवाइज सो जाएंगे आप लोग, जल्दी बोलिए. What is A? A is stable. Stable. And B is also Stable. and we have to form a compound AB. Make sense? सही है? Yes. If both of them are stable, then they are not going to react very easily. Make sense? दोनों अगर स्टेबल हैं तो उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे. क्या ख्याल है? Yes. ठीक है. So we will introduce something that is very reactive, and that is a catalyst. Catalyst क्या करेगा? Catalyst is going to react with A and B. It is going to make a bond with A. It is going to make a bond with B, and it will bring A and B closer. अब ध्यान सुनिए. A on in itself it was what? Stable. B in itself it was stable, but now when A is making a bond with catalyst C, B is making a bond with catalyst C, these will be relatively less stable, and they are also very much close to each other. And since they are close to each other, they can react with each other. They will form AB, and C वैसी का वैसी बाहर निकल जाएगा. So it takes part in the reaction, but it does not go permanent change. Temporarily C का जो configuration है, structure सब कुछ change हो रहा है, but it is not undergoing a permanent change. Make sense how a catalyst works? Yes. ठीक है. अब because C is very reactive, this reaction will be quite easy. C आसानी से A और B से react कर जाएगा, and when C is attached with A and B, the reaction between A and B will also be easier. So it is giving a completely different pathway with a lower activation energy, and therefore it increases the rate of reaction. This is a very important line. Catalysts provide a different reaction pathway with lower activation energy, and therefore increases the rate of reaction. चलिए, moving on. ये ग्राफ है आपके पास. It is how the catalyst works. तो जो आपके पास ग्रे ग्राफ है ना, this gray one it is without catalyst, and this orange one is with catalyst. So these two are different reactions completely, as आप देख सकते हैं, because वहां पे reactant ही A और B, और यहाँ पे reactant A, B, C तीनों ही हैं. ठीक है. So what happens? Since here we are having a lower activation energy, the reaction is going to be faster. ठीक है. अब जो एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच वहां पे चेंज नहीं होगा, ओनली द एक्टिवेशन एनर्जी चेंजेस. ठीक है. चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के बाद आपके पास एक क्लास बचेगा केमिकल काइनेटिक्स का, दैट विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द आर्हेनियस इक्वेशन. एंड अच्छा, आज 10:30 बजे आइएगा आप लोग. ठीक है. एट 10:30 मीन्स 8 PM KSA और 9 PM UAE time. We will discuss questions on
केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो आपका रिवाइज हो जाएगा, एंड आर्हेनियस इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल करेंगे जब आपकी क्लास हो जाएगी तब, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज रिवाइज फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पोर्शंस जो हम लोगों ने 2 क्लासेस लिया है। द डेट्स आर